Hello dear friends, today I will go to discuss about the membrane. So how many types of the membranes present in the body and what are their functions, and we will discuss about overall related to the membranes. So let's start the topics about the membrane. So what is the membrane? Membrane is cover and line all the part of our body inside and out. Means the membranes covering and lining the part of our bodies, and like the surface of our body, outer surface of the body, and inner side, inner surface of the any organs lined out. So that is called membranes. So typically of the science of the anatomy, there are the different names for the membranes in different places all over the bodies. So we can say there are the different names given to the membranes due to their, because they present in different place over all the body. So name is given to the uh, name is given to the membranes according to their places. There are four basically present membrane in our body. Almost all of these are found from the epithelial tissue. So a membrane is formed by the epithelial tissue. First one membrane is the mucous membrane. So these are the open to the outside of our body. Sticky mucus helps protect our openings. So there are the this type of mucous membrane present in the digestive system. This is in like example is the mouth and esophagus, respiratory system, nose and trachea, reproductive system in vagina, and urinary is the urethra. In these mainly system present mucous membrane, they secreting the mucus like secretions, and they keeping the wet of surface of the membranes, wet surface of the organs, inner side of the organs we can say. तो open है outside of the bodies in the ल्यूमन पोर्शन. सो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस इसोफेगस डाइजेस्टिव में, एंड रेस्पिरेटरी के अंदर के नोज एंड ट्रेकिया, रिप्रोडक्टिव वेजाइना एंड यूरिनरी के अंदर यूरेथ्रा जो है उसके अंदर प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन. Next one is the serous membrane. There are in space content inside our the bodies, no opening to the outside. When they line a body cavity, they are called the parietal membranes. तो जो पैराइटल मेम्ब्रेन्स है उसकी जो बॉडी केविटी है उसको लाइन करने वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड सीरस मेम्ब्रेन. सो दिस इज द पैराइटल मेम्ब्रेन. व्हेन दे कवर ऑर्गन दे आर कॉल्ड विसरल ऑर्गन्स. अगर ये ऑर्गन्स को कवर करने वाली मेम्ब्रेन्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? विसरल ऑर्गन, सॉरी विसरल मेम्ब्रेन. और नेक्स्ट वन है व्हेन सम सीरस मेम्ब्रेन्स आर थिन वेट एंड स्लिपरी. जो सीरस मेम्ब्रेन वो कैसे होते हैं? थिन है, स्लिपरी है एंड वेट है. फ्लूइड्स में पास थ्रू देम इजली. तो इजली थ्रू फ्लूइड कैन बी पास बाय दिस मेम्ब्रेन जो है. नेक्स्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट. सो जो क्लोजली टू द ऑर्गन है प्रेजेंट मेम्ब्रेन उसको हम क्या बोलते हैं? सीरस मेम्ब्रेन. दैट इज अवे फ्रॉम दिस ऑर्गन present membrane, that is called parietal membrane. So look closely, see how the parietal pericardium line the pericardial cavity, and visceral pericardium cover the surface of the heart. So visceral present toward the organ and parietal present away from the organs toward the cavity we can say. So there is the fluid between the membrane, so the heart can beat without the membrane wrappings. The serous membranes of the different cavities have different names. Example is the pleura, that is the serous membrane है line the pleural cavities. Second is the peritoneum, line the abdominal cavity. Third is the pericardium, that line the pericardial cavity. So review, remember about what is in the each of these cavities. तो pleural, peritoneum and pericardium. Pleural in the pleural cavity, in the lungs के around present है जो पेरिकार्डियम जो एंड द एब्डोमिनल कैविटीज हैं, एंड थर्ड वन इज द पेरिकार्डियम लाइन द पेरिकार्डियल कैविटीज इन द है. नेक्स्ट वन इज द मेडिकल नोट जो है. सीरियस मेम्ब्रेन कैन गेट इन्फेक्टेड एंड इन्फ्लेम्ड. देर आर वेरी सीरियस इलनेस इफ प्लूरा में अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाए मेम्ब्रेन के अंदर तो उसको दैट इज प्लूरेसी जिसे बोलते हैं वो है. पेरिटोनियम में है तो दैट इज कॉल्ड पेरिटोनाइटिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम लेयर, दैट इज द पेरिटोनाइटिस. नेक्स्ट वन क्या है? पेरिकार्डियम. तो पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस जो है. cutaneous membrane. Cutaneous membrane are the thick, warm, dry and waterproof. Thick, warm, dry and waterproof.
प्रूफ जो है कौन से कुटेनियस मेम्ब्रेन है. एग्जाम्पल इज द स्किन. तो सबकुटेनियस अंडर द स्किन. When you get shot in arm, it is the subcutaneous injection, meaning the medications were delivered under your skin. तो cutaneous membrane जो वो है. Next one, last membrane, the synovial membrane. So synovial membrane is the membrane जो है वो किस प्रकार का है. Synovial membrane, they are the thicker, tough membrane and surround and cover the joints in our body. तो जो जॉइंट्स है, साइनोवियल जॉइंट्स है, उसको कवर करने वाले जो मेम्ब्रेन्स हैं, थिकर है, टफ मेम्ब्रेन है, सराउंडेड है, कवर द जॉइंट्स एंड कवरिंग द जॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन. साइनोवियल मेम्ब्रेन लाइक द प्रेजेंट इन द नीज एंड एल्बो, these are the filled with the slippery lubricant fluid also. So this slippery lubricant fluid called synovial fluid, so our joints move smoothly. These are the not epithelial tissue but instead are made up of the connective tissue. There are the other connective tissue membrane, but this is the only kind we will talk about right now. So the synovial membrane जो है वो है. तो four basically type of the layers and membranes present. First one, that is the parietal membrane, serous membrane, and क्या है, synovial membrane, cutaneous membranes. These are the different types of membrane is present. The serous membrane, mucous membrane, second is the serous membrane, third is the cutaneous membrane, and fourth one last is synovial membranes. So this is the all about related to the membranes.